Good morning. I'm Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cloud computing. Cloud computing में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम आस एंड पास की जो सर्विसेज है उनके बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ बेसिक्स मॉडल्स देखे आस के रिगार्डिंग। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सर्विसेज उनका इंट्रोडक्शन कैसा है और वो सर्विसेज आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द पब्लिक क्लाउड एंड द प्राइवेट क्लाउड instead of an in a traditional on-premises data centers. The infrastructure is delivered to customers on demand while being fully managed by the service provider. जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल होगा, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी हेल्प के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना जो भी टास्क है, जो भी उनको यूटिलाइजेशन करना है, वो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड वो एक्सेस कर पाए और वो पर्टिकुलर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही से यूज कर पाए अपनी जो भी गोल है उसके लिए। सो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस वेयर द एंटरप्राइज रेंट और लीज servers for the compute and storage in the cloud. Users can run any operating system or applications on the rented servers without any maintenance and operating cost of the servers, which is a very good advantage of that. एंड इसका एक और एडवांटेज है कि जो सर्विस इंक्लूडेड है, कस्टमर्स को जो एक्सेस करने हैं, जो भी जियोग्राफिकल लोकेशंस एक्सेस करने हैं एंड यूजर की ओर से, सो उसके लिए काफी इजी हो जाता है। एंड आज ऑटोमेटिकली आपकी जो भी सर्विस है उसको क्या करेगा, उसको वो ऑटोमेटिकली स्केल करेगा, मीन्स उसकी प्रोडक्शन के लिए ध्यान देगा, बॉट अप एंड डाउन उन दोनों के लिए वो देखेगा जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है। और जो भी एसएल है, सर्विस लेवल अग्रीमेंट है, उनकी जो भी डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करेगा आपको सर्विस। एंड इन द टर्म्स ऑफ द अप टाइम एंड परफॉर्मेंस बोथ, सॉरी। सो जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी वर्क करवाना है उसके लिए वो वैसे वर्क करेगा। एंड इट एलिमिनेट्स द नीड टू मैन्युअली प्रोविजन एंड मैनेज द फिजिकल सर्वर्स इन डेटा सेंटर्स। और इस तरीके से हमारे अप टाइम एंड परफॉर्मेंस के लिए हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का डेमो यहाँ पे अवेलेबल है। मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड का यूज हो सकता है। वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करता है। बट जब मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करता है, उससे पहले वो क्या करता है, जो हमारे डेटा सेंटर्स है, सर्वर्स है, वहां से अपना डेटा फैच करता है, मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को देता है एंड वो सर्विस प्रोवाइडर को देता है। एंड वो सर्विस प्रोवाइडर आगे जो भी क्लाइंट है, एंड यूजर है या तो एप्लीकेशन है, उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बेनिफिट्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कैन बी मोर एफिशिएंट for an enterprise than owning and managing its own infrastructure. New applications can be tested with an IAAS providers instead of acquiring the infrastructure for the test. इसके अलावा और भी क्या एडवांटेजेस है? कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी. क्लाउड सर्विसेज इन डिफरेंट लोकेशंस अलाउज एक्सेस टू एप्लीकेशंस एंड द डेटा ड्यूरिंग अ डिजास्टर और आउटेज. Second thing, faster scaling. Quickly scale up and down resources according to application demand in all categories of the cloud computing. Third one, core focus. Infrastructure as a service allows enterprises to focus more on business activities instead of the infrastructure and cloud computing. So ये इसके एडवांटेजेस है। इसके अलावा अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? सो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड सेटिंग. तीनों में से किसी भी मॉडल में वो इम्प्लीमेंट हो सकता है. कस्टमर्स यूजेस अ ग्राफिकल इंटरफेस टू चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज नीडेड. The infrastructure can also be accessed through an API key. So new servers are brought online as a part of an automation when needed. जब भी ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे आप
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का यूज कर सकते हो. सो इन एंटरप्राइजेस जो आज की सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली कैसे वर्क कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट. Test and deployment environments are fast and easy to set up with the infrastructure as a service. This allows for the bringing applications to the market quicker. Second thing, backup and recovery. Interface as a infrastructure as a service solve for storage management and recovery issues, and it handles the unpredictable demand and the storage needs without the enterprise having to dedicate staff to manage it. Next thing, big data analysis. Infrastructure as a service provides the processing power to economically mine the large data sets. तो इसको इम्प्लीमेंट करना काफी इजी है. टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट करना है. सेकंड, बैकअप एंड रिकवरी पे ये वर्क करेगा एफिशिएंटली. एंड थर्ड, बिग डेटा एनालिसिस पे वर्क करेगा. तो नाउ हाउ डज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वर्क्स? वो कैसे वर्क करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपके क्लाउड में स्टार्ट होगा वहां की जो सर्विस लेयर है उसके अकॉर्डिंग वो पास मीन्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को या तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को पास ऑन होता है, जहाँ पे कस्टमर के यूसेज के अकॉर्डिंग वो डैशबोर्ड्स एंड एपीआई को डायरेक्टली एक्सेस करेगा, सर्वर्स को एंड स्टोरेजेस को उसको मैनेज करेगा एंड हायर स्केलेबिलिटी के लिए वो वर्क करेगा. Infrastructure as a service users can also enjoy the many advantage of the infrastructure as a service, and such as accessing the same infrastructure technology services of a traditional data centers without having to invest as many resources. It is a flexible cloud computing model that allows for the automated deployment of servers, processing power, storage, and networking. So now we have the question, does EVI work with the infrastructure as a service? Yes. Many companies that uses the infrastructure as a service to host their applications can also use the AVI SaaS or the AVI Vantage to deliver the application. AVI SaaS is an one type of application कि जो infrastructure as a service को support करता है और उनकी जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है उनका आप यूज कर सकते हो. उसमें से वो दो चीजें यूज करता है, वो है AVI SaaS एंड AVI Vintage. Now AVI SaaS वो क्या कंटेन करता है? It complements AVI's flagships, provide AVI Vintage platform as the cloud hosted options to deliver the application service including distributed load balancing, web application firewall, global server load balancing, network and application performance management across a multi-cloud environment. उसके साथ साथ ये क्या हेल्प करेगा? टाइम टू वैल्यू, ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी एंड डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन अ हायर सिक्योर मैनर. सो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के रिसोर्सेज है उसकी ज्यादा जानकारी लेता है कि वो कैसे वर्क करेगा, मॉडल्स के साथ वो कैसे वर्क करेगा. So with the infrastructure as a service, your organization is responsible for managing much more than you would be with the SaaS and PaaS. The extra work means more control, more security, more flexibility. Instead of purchasing a predetermined platform like with PaaS, you can design your infrastructure to suit your business needs. The only cloud computing model to include hardware, as can be a great option for the business that's need or may need the security and accessibility of the hardware. If you need less control and no hardware, then you may consider the PaaS depending upon your business. So this is the all overview of the cloud computing. जो तीनों सर्विसेज हमारी आसपास एंड सास. आस में क्या आएगा? मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर आता है. सो क्या है? फिजिकल डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेजेस, ये जो सारी चीजें हैं वो कहाँ पे हैंडल होगी? आस पे. दूसरा चीज है नेक्स्ट लेयर इज पास. सो पास पे क्या हैंडल होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैंडल होंगे, डेटाबेस होगा, मैनेजमेंट होंगे और उनको उनके रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट टूल्स है वो होंगे. Third thing is SaaS, cloud hosted application. So this is the all overview about the cloud computing. And इसमें AAS कैसे help करता है इसको compete करने के लिए? So it is a highly scalable and flexible. So you can meet your organization's need whatever they are, whenever, in a time of immense change, not having a commit to hardware, being able to scale as needed, but have the security and the high performance is a huge asset. And
though your staff has more responsibilities, that IAAS still helps your business to save your money. And you can purchase the resources as needed. Instead of having an expensive hardware upfront that may not work for you long term, it's easy to develop a data analytic platform on the top of the IaaS architecture, so you can quickly and easily integrate essential data analytics into your business. So that is all about the services of IaaS. We'll see more about the virtualization concept in the next session. Thank you so much. If you have any doubts regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much. Have a great day.